request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे सेना पर कौन दबाव बना रहा है। एक बड़ी बात सामने आई है। आज शाम तीनों सेना के प्रमुख मतलब बड़े सीनियर अधिकारी मीडिया को संबोधित करने के लिए पहुंचे और उस पूरे कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरीके से भारत ने अटैक किया, विस्तृत तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी है। आपने सुना भी होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बड़ा सवाल है। क्या किसी ने सेना से इसके लिए कोई प्रूफ मांगा था, या किसी ने सेना के सैन्य कार्रवाई पर किसी ने उंगली उठाया था क्या, या फिर हमारे सेना के बहादुरी पर किसी ने सवाल खड़ा किया था। जिस तरीके से सेना पाकिस्तान में घुसकर पहली बार मतलब हाल के दिनों में बालाकोट में पाकिस्तान में घुसकर हमारे सेना ने अटैक नहीं किया था, पीओके में अटैक किया था। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 3 ठिकाने पर बमबारी किया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। पूरा देश जश्न मना रहा था। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेना को लगता है जैसे सफाई देने के लिए हम लोगों के बीच भेजा गया हो। वाकई में सेना के पराक्रम पर सवाल किसने खड़ा किया था? जो तीनों सेना विंग के सीनियर अधिकारियों को कहना पड़ा कि हमने क्या किया है, पाकिस्तान को कितना डैमेज पहुंचाया, आखिर क्यों आना पड़ा? और जिस तरीके से ये लोग आए हैं उसमें देख लीजिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने दिखाया है कि किस तरीके से वायुसेना के सीनियर अधिकारी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम दबाव की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सेना के किसी अधिकारी के द्वारा ये बात कहना अपने आप में एक बड़ी बात है और हमें लगता है कि सरकार को सफाई देनी चाहिए कि किस संदर्भ में हमारे वायुसेना के इस अधिकारी को ये वक्तव्य देना पड़ा है। बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, हम 3 बार इसलिए रिपीट किए कि किस तरीके से वो दबाव में है। कहीं उन्होंने कहा, सुना ही होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि हमें आना पड़ रहा है। क्या ऐसी कौन सी बात हुई? किसने हमारे सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया? आज पूरे देश में सवाल सेना के पराक्रम का नहीं है, सवाल मोदी के पराक्रम का है। हमारा सेना तो पहुंच ही गया था। हमारे सेना तो पूरी रात जगकर पाकिस्तान के मंसूबा पर पानी फेरता रहा, उसके हर मिसाइल का जवाब देता रहा, उसके हर ड्रोन को ध्वस्त करता रहा। किसी ने सेना पर तो सवाल नहीं खड़ा किया। अचानक सीज फायर की घोषणा अमेरिका से होती है। लोगों की आपत्ति इस बात को लेकर है। सेना के कार्यकलाप पर तो कोई किसी की आपत्ति भी नहीं है। सेना के पराक्रम पर तो सब लोग खुश हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है ना कि जब सेना अपर हैंड में थी, सेना जब लगातार अटैक पर अटैक किए जा रही थी, पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर रहा था, अचानक सीज फायर क्यों कर दी सरकार? और सीज फायर हुआ तो ये अमेरिका से इसकी सूचना भारत के 140 करोड़ जनता को की गई। सवाल ये है ना, तो इस सवाल को भटकाने के लिए सेना के तीनों विंग के बड़े पदाधिकारी को भेजकर क्या संदेश मोदी देना चाहते हैं? और सेना ने अपनी बात तो कही दी, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने कही है।
तो आप भी देख लीजिए, वायुसेना अध्यक्ष नहीं, वायुसेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं कितने असहज हैं। उन्हें स्वाभाविक तौर पर उनको देश के सामने सफाई पेश करना पड़ रहा है कि देखिए हमने क्या क्या किया है। तो इससे बड़ा सेना के साथ हमें लगता है कि अपमान की बात कोई नहीं हो सकता। आप देखें, एक बार फिर से देखिए और सेना ने क्या ब्रीफ किया है ये भी सुनिए। Request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapon on early morning 7. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point
I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision.